तो बहुत compliment था. Thank you so much. By the way, I will be actually walking you through the basics of the metacognition today, and for all of them over here, I think this is one of the very interesting topics, and I'm going to actually focus all the strategies with respect to students itself, because that's what I have actually focused on. Because it can be customized in the various different categories, and today I'll just walk you through each one of them, and this is exclusively customized to you, and trust me, you will all be able to listen and relate and learn from it and understand the gravity of what exactly is it. If I may jump in for 1 second. Yes, please. So मैं आपको कभी-कभी बीच में पता लगेगा कि क्या हम बात कर रहे हैं. So that is, exactly. I mean, before I just jump onto the entire subject, give them a context. I don't want to influence them with any of my thoughts. Sure. I want them to relish it and enjoy the topic. Go ahead, please. Yes, please. So can I share my screen in the meanwhile? Is that okay? Yeah, please go ahead. I think Sikumar is listening. He might be working. No, I'm listening. Yeah, go ahead, please. Okay. Sure, sir. Thank you so much. Thank you. So I'll just share my screen right now. Please let me know once when you are all able to see my screen. Are you all able to see my screen? Yes, ma'am. Okay, wonderful. Okay, thank you so much. क्या बता सकता है कि क्या दिख रहा है? What are you able to see? Am I audible? Yes, you are audible, and I think students are hesitating. I can see metacognition on the topic. Yeah, just okay, my dear students, just read out what it is. I'm not asking you for any question. Read out what it is, and that is more than enough for me. Am I okay with that? Are you okay with it? Yes, ma'am. Okay, brilliant. I will just share it with a different context. Okay, you're able to see my screen right now very clearly, the metacognition and the guiding compass of your thoughts. Are you all with me? Yes, ma'am. Perfect. Thank you so very much. Okay, so let me ask you a couple of questions. So I would request Tiwariji, I will give you, whenever I pause, you can please take over. Else, you can also pause me as well. I'll ask you some of the very simple questions, and before we go forward, good evening to each one of you. Thank you so very much for being over here. It means a lot. And in the next couple of 1.5 hours, this is going to be a very revelation and a kind of a very intriguing and a very revealing webinar for making you understand what none of us have actually thought about it, but extremely interesting topic. And we all go through, every day we live by it, but we would not have actually thought about it. We wouldn't have focused. We wouldn't have paid attention to what exactly is it. But trust me, my dears, we all are going through this. We all live through this day in and day out and every moment of our time. So I will make you understand what exactly am I really speaking. So hang on, be patient enough. So let's understand each one of them, and my humble request to each one of them over here, everybody, irrespective of your age, I would want you to participate in this. Okay? Please be interactive. There is nothing like right or wrong answer or anything like that. I want each one of you to answer some of these questions. Okay? So let's go ahead to understand few of them. Give it a try. Okay? Can you tell me when did India fought its first war of Indian independence? Anybody? When did India fight its first war of Indian independence? कोई भी बोलो, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857. Sorry, Inshira? 1857. Perfect. 1857. That's the right answer. Okay. Thank you, my dear.
So the next is, what is the green pigment that is in the leaf that makes it green? Anybody? Anybody? Anshul, Harsh? What is the green pigment that is in the leaf that makes it green? I'm sure you all know this. Nobody? I'm surprised. I'm really surprised. Mom, is it chlorophyll? Absolutely. It is chlorophyll. Absolutely, Indira. Yes, it is. Okay. Can you name any three freedom fighters of India whom you are inspired from? Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, etc. Wonderful answer. Thank you so much. Okay, let me ask you this question. Okay, when did you think about whenever like say for instance when Inshira took over, what is the green pigment that is in the leaf that makes it green, or when did India get its first independence? Inshira, what exactly happened in your mind? Do you recognize the process? I started thinking, ma'am. You started thinking. Okay, what are the things that came to your mind when you first answered that question of 1857? About the war? About the war. Okay. Did you have any visuals? What thoughts did you or was it just like a fact that came into your mind? Both of it. I visualized the war which happened and the date. Remember the date. Okay. So what happened in your mind? Do you recognize the fact when you answered your I didn't get you, ma'am. So you answered the second answer. What is the green pigment that is in the leaf that makes it green, right? So when you answered that question, what really happened in your mind? What and all came into your mind before you answered it? About the color and photosynthesis process. Wonderful photosynthesis process. That's what you got it. Okay, let me ask the question to Anshul right now. Anshul said, Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, or what was the third name, Anshul, whom you said? Bhagat Singh. Okay. So when you answered this question, do you recognize who and all came into your mind, my dear? Sorry to interrupt you, ma'am. Can you speak in Hindi? अंकल मैं पूछ रही थी कि आपने बताया महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के नाम बता रहे थे ना, इसके नाम से जुड़ा हुआ क्या थॉट्स आपने सोच कर वो आंसर? एक्चुअली मैम महात्मा गांधी एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे. इन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी और हम सफलता भी पाए इस पर. और ये महात्मा गांधी जो थे वो नरम दल के संस्थापक थे. दैट्स ऑल मैम. यही सोच के मैंने बोला. परफेक्ट. ओके, सो क्या क्या थॉट्स आया सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के बारे में? क्या थॉट्स आया उसका? आई मीन आपके हिसाब से व्हेन यू वर थिंकिंग उसका पिक्चर आया आपके मन में? वर यू एबल टू थिंक ऑफ देयर फोटोज, देयर पिक्चर्स, विजुअलाइज देम? मुझे उनके विचार को याद आया कि मुझे ये लगा कि मुझे बोलना चाहिए. Super. Okay, when you close your eyes, Ansel, can you think of Bhagat Singh? Can you see him in your mind? Yes, ma'am. Perfect. Okay, awesome. So, do you recognize that you were able to think when you answered these questions to everybody? Indra, Harsh और Anshul, सभी के लिए ये प्रश्न होता है क्योंकि while you were answering these questions, were you able to think? What were you thinking? When you answered 1857, chlorophyll, Bhagat Singh, Mahatma Gandhi, when you answered these questions,
आपके मन में कुछ थॉट्स आया होगा, do you recognize the thoughts? There were some thoughts in your mind. Those came in, facts came in, information came in. Were you able to think about it? तिवारी जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं बोली उसको ट्रांसलेट कीजिए प्लीज। आपने सब ट्रांसलेट कर दिया है, मेरे ख्याल से बच्चे समझ रहे हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ फिर से। तो आप लोगों से प्रतिमा जी ये पूछ रही हैं कि आपने जो जवाब दिया, उस जवाब को देते समय आपके दिमाग में कुछ तो आया होगा जिससे आपने जवाब दिया। जैसे मान लीजिए कि मैं जब भगत सिंह के बारे में जवाब देता हूँ तो मुझे याद आता है कि उनको फांसी पर चढ़ाया गया, या उनका फोटो देखा है जो जेल में बैठे हुए कुछ लिख रहे हैं। इस तरीके के जवाब, इस तरीके का पिक्चर आता है दिमाग में। महात्मा गांधी को जब देखते हैं तो जब महात्मा गांधी का जवाब देते हैं तो उनका दांडी मार्च का पिक्चर आता है कि वो लाठी लेके आगे जा रहे हैं। तो इस तरीके के पिक्चर्स, फोटो या विचार, या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में जब कोई पूछता है हमसे तो मुझे मंगल पांडे की याद आती है, किस तरीके से उनको फांसी पर लटकाया गया था। वो फोटो मेरे दिमाग में आता है। जिसका फोटो नहीं देखा है उसके बारे में जब कोई बोलता है तो हमारे दिमाग में एकदम से अचानक उसके कुछ विचार याद आते हैं। जैसे अभी आंचल ने महात्मा गांधी के विचारों के बारे में बताया। तो प्रतिभा जी ये पूछ रही है कि जब आपने जवाब दिया तो जवाब देते वक्त आपके मन में एक विचार कौंध गया होगा या एक फोटो कौंध गया होगा, अचानक एक चीज मन में आई होगी जिसके बेसिस पर आपने वो जवाब दिया है। वो पूछ रही है कि वो बेसिस क्या था, आपका विचार, उनका कोई विचार आपके मन में कौंधा, कोई फोटो आया आपके मन में, ये वो पूछ रही है। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली। थैंक यू तिवारी जी, थैंक यू सो वेरी मच। और आगे बढ़ते हैं और एक एक्सरसाइज है। You were able to think of what will you think. Okay, that is one part, particular part. Let's continue. I have another 3 more questions. So when it comes to, I would want you to think. Okay, close your eyes. Think of your school classroom. All of us have been to a class, right? We all have been to school. When you close your eyes, when you think of your own classroom, can you please tell me what will come to your mind? Anybody, all of you can answer. Any of them can answer this question. When you think of your classroom, what will come to your mind? Yes, Raj, please. When I think of my classroom, the first thing into my mind is that the blackboard and the benches, Very good. then my friends and then teachers, and then books and copies. The last. Brilliant, brilliant, Raj. Awesome, awesome. Thank you so much. Yes, please. Anybody else who can pick up? When you close your eyes, think of your school class, irrespective of your age, whether आप student हो या teacher हो और work कर रहे हो तो but please think about your school classroom. Yes, Bharati. What Good comes? evening. Good evening. Good evening. What comes to your mind when you think of school classroom? Anybody? Yes, ma'am. I think of teacher teaching and students listening attentively. Students listening attentively. Okay, brilliant. Anybody else who would want to answer this question? Raj and Insira all done. Anybody else? Okay. Let me ask you the second question. Think about your result today of your examination. हम सभी एग्जाम दे चुके हैं और रिजल्ट आ चुका है और some of them are students over here. अभी भी आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं और रिजल्ट डे होता है ना, क्या होता है उस दिन? What happens on that day and what is the kind of your feeling? Think about your result today of your exam and what will happen in your mind? Can you relate and can you tell me what do you feel on that day?
answer this question. What happens to you on the result day of your examination? Raj, yes, Raj, please. When I think about my result day of my examination, the first thing is come like suspense, how many marks I get it, then the notice board, and then the chart of the result, like who scored the highest, who is second, third, and the last. These names were like what I want to know, and the parents like there was a meeting held in that day, and then we can see our mistakes, what we have done in the copies. So these are the things really I really good when I. Superb, superb, awesome, Raj. Very, very good, very good. That's exactly what I wanted. You were very apt in answering that question. Okay, anybody else? Can you pick up that question on what do you think about your result day? All of us have been through that education. What happens to you on that particular result day? Yes, Inshira. Some anxiety which we have before we see the results and all those impossible thoughts which we get, and after knowing the results, it will be a totally different thing. Absolutely, absolutely. So all of us were very anxious. What happens? And as Raj said that, okay, what is the kind of a suspense, and we are very tense. Okay, brilliant. So let's go ahead and look forward for the another one. Think of a very recent event which made you very happy. I'm sure there would have been some occasions where you were very happy. It might be your birthday, it might be some recent celebration, or you might have met some old friends, or you might have traveled outside where you were very happy about it, or you would have explored something where you felt like, wow, this is really nice, a kind of an aha moment. Think of that recent time where you were very happy and what comes to your mind and what makes you happy, what made you happy. Yes, Raj. Super. Yes, please. The recent event when I get happy, it's 15th August, Independence Day of India. Actually, I get happy because of that. On that day in my school, the leader of the march means the parade. I'm the leader of the battalion. I stand in the front of that, and I will guide them to how to parade, and I will order them all that things. And also at that day there was a debate competition held in our school, so I got first prize in that. So for this reason, I was happy on that day. Very good, Raj. First of all, congratulations. Very nice. Thank you. Wonderful. So nice to hear that. Okay. Anybody who would yes answer? Yes, my dear. Tell me. बोलिए. मैम मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी. मैं अगर जब रिजल्ट मिलती है तब उस टाइम जब रिजल्ट मिलती है उसके बाद जब रिजल्ट का स्कोर पता चलता है, अब जब पता चलता है कि मैं पास हो गई या फर्स्ट आ गई, तो उस समय जो खुशी होती है वो सबसे बड़ी खुशी होती है. जरूर जरूर. और उस रिजल्ट के पहले क्या फील कर सकते, क्या फील करते हैं आप? सस्पेंस बना रहता है कि क्या होगा क्या नहीं. ओके. आपको दिक्कत होती है या अनईजी फीलिंग होती है, क्या होती है बिफोर द रिजल्ट से पहले? से पहले तो टेंस रहते हैं कि क्या होगा, यही इसमें सोचकर. करेक्ट, बहुत टेंशन होता है. और कोई आपका रीसेंट हैप्पी मोमेंट आंसर? ये तो 15th अगस्त थी, तो फिर यही अभी रिसेंट मोमेंट. वेरी गुड. और क्या हुआ था उस दिन? इस दिन हम लोगों ने झंडा तोलन किया और बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलके पार्टिसिपेट किए. कोई डांस पार्टिसिपेट, सिंगिंग पार्टिसिपेट, डिबेट पार्टिसिपेट सब किए. तो उसमें जो एंजॉयमेंट हुआ ये
जैसे आपके मामा आपके घर आए हैं और somebody from abroad had come to your home, you're waiting for it, बहुत दिनों से उनका इंतजार था, बहुत दिनों से आए, आपको बहुत खुशी है। तो इस तरीके के जो व्यक्तिगत अनुभव ही हैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस अदर देन दीज नेशनल एक्सपीरियंसेस, वो भी इसमें आते हैं। जो रिसेंट इवेंट का मतलब वो भी है कि कुछ ऐसा हुआ अचानक से जिससे आपको काफी खुशी हुई, आपने खेत लगाया है, उसमें आपका धान बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी एक रिसेंट इवेंट है। तो अचानक से वो एक बहुत अच्छी चीज आपके मन में आई उसके चलते। तो ये सारे अनुभव जो हैं, ये सारे अनुभव आपके लिए अच्छे इवेंट हैं जिससे आपको खुशी होती है। तो उन सभी अनुभवों की बात प्रतिमा जी कर रही है। Absolutely. Thank you, Tiwari ji. Thank you so much. So let me go forward and make you understand a couple of things, my dear. So initially, when I asked you the previous question, it was very factual. I asked you when was the first war of Indian independence. It was a fact. It was an information. And then what was the green pigment? It was a fact. And then I asked you to name few people where you remember. Okay, I have already studied something. Let me remember. The visuals came right in front of it, and the connecting thoughts came into your mind, etc. Going further, I asked you some personal questions. Think about your classroom. Think about the day when you had your results. Think about your happy moments recently. This is your very individualistic. This is your individual feel that you have. So while you were, answering all these questions, point number one, some of the facts came into your mind which you had studied, crystallized in your mind, which you already have memories and it is stored in the memory. That comes back along with a lot of information. तिवारी जी बोल रहे थे कि मंगल पांडे का नाम आया था और वार के बारे में और ग्रीन पिगमेंट इंदिरा बोली थी okay there is a green pigment and photosynthesis, the process of photosynthesis came to her mind. And until when you answered, it was Mahatma Gandhi and the way that he brought us the freedom, the entire process, the Gandhi March, etc. This was all the connected thoughts. So in the second question, we felt that it was our own individual experience. हमारा वैयक्तिक अनुभव होता है स्कूल के बारे में, स्कूल के क्लासरूम के बारे में सोचते हैं तो क्या क्या नजर आता है और रिजल्ट डे के दिन क्या हुआ था, हमारा फीलिंग्स क्या था और हैप्पी मोमेंट क्या होता है और किस लिए जोड़ते हैं हम, खुशी किस लिए मिलती है, और we start thinking about all these aspects. So as to answer these questions for you, you thought about it. There were a lot of thinking process. Do you all agree that you were thinking while you answered all these questions? All of you, Ansel, Raj, Inshira, all of you were thinking of something while you answered this question, right or wrong? Correct. So Raj gave me a thumbs up saying that yes, we thought about it. So Anshul, you were also thinking about it. Perfect. Okay. So Inshira, I'm sure that she also would be, agreeing to this. So we were thinking about it. What do you think you knew? You knew something about it. Next is, there were also some of the aspects where you did not know physics. So one of the aspects is you cannot think what you don't know. What you think you know and what you think you didn't know about few aspects, do you recognize the gap in between is called metacognition. Metacognition क्या होता है? क्या हमको पता होता है और क्या हमको क्या पता है और हमको क्या पता नहीं है. तो इन बिटवीन गैप क्या होती है, तो इसके बारे में और इस विचार के बारे में क्या बोलते हैं हम, वी कॉल इट एज अ मेटाकॉग्निशन. What I know, what I don't know, and the gap in between is called. So let me put it across in a very simple way as a part of definition, and then I will request Tiwari ji to translate that for me. So as I told you, metacognition is the ability to think about your own thinking process. Thinking about thinking. हम सोच रहे थे ना, हमको क्या पता है, भगत सिंह के बारे में क्या पता है, महात्मा गांधी जी के बारे में क्या पता है, और क्लासरूम के बारे में क्या पता है, और किस टीचर्स हमारे मन में आए थे और क्या हुआ था क्लासरूम में, हैप्पी मोमेंट क्या थी, किस लिए हैप्पी हुए थे, वो एंजॉयमेंट का मतलब क्या है, वो
started thinking about all this. Thinking about thinking is called metacognition. A cognition word होता है ना, the meaning of the cognition is thinking. Whenever we say cognitive skills, it means it is called thinking skills. Metacognition is thinking about thinking is called metacognition. So I'm repeating once again, what am I thinking? I'm thinking of Bhagat Singh. When I'm thinking of Bhagat Singh, what and all will I think about Bhagat Singh? If I think about my classroom, what and all will I think about my classroom? Metacognition is the ability to think about your own thinking process. So it is being aware about your thoughts. What am I thinking at this moment of time? What am I feeling? Why am I feeling the way I'm feeling? And try to understand that particular concept. तो क्या होता है कि हमारा सेल्फ अवेयरनेस मेटाकॉग्निशन से बहुत बढ़ती है. So what do we say is first understand your thoughts. Where are you thinking? How much are you understanding? How much you did not understand? What am I learning all about? Am I solving any problem? Am I making any decisions? All of them is a part of metacognitive process. Metacognition is thinking about thinking, knowing that I am knowing something. So it is very simple. Don't get too confused. It sounds very complex. बहुत दिक्कत होती है. मगर ये बहुत simple है. You did all this. All that whenever you answered my ears, all you did was you were thinking of something. About the thinking process, your thought process. You were here while I asked you this question. You went into the classroom. You imagined all of them. They again came back. I then asked you, saying that what and all did you think? You were able to do it. So thinking about thinking. What do you know? What do you don't know? How do I bridge that particular gap is called metacognition. What is simply put across metacognition. Thinking about thinking, knowing about knowing. Just getting inside yourself is metacognition. So that is what I wanted to understand, and this is what you did it in the first two slides. A couple of minutes ago, you went through this process. You actually lived through metacognition by answering those questions for me. Now I would like to pitch in and help me translate. I'll just step back a little bit. एक सेकंड के लिए पीछे जाता हूँ. जो स्टूडेंट्स हमारे हैं, हम लोगों के लिए खासकर कि हम लोगों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने एक अभी स्कूल है और ट्यूशन है और इस तरीके की सॉलिड चीजें सामने हैं जो आप देख सकते हैं. तो इसलिए अभी जो प्रतिमा जी बता रही हैं हमें, वो थोड़ा अपने दिमाग में पीछे जाके खोजने की बात है, और वो थोड़ा कठिन हम लोगों के लिए इसलिए है कि अभी हम लोगों का टाइम, स्टूडेंट्स का टाइम खासकर उसमें नहीं लगता है. लेकिन ये जो क्लास है, इसका उद्देश्य ये है कि हमें जानना चाहिए कि हम जो भी जवाब देते हैं उसके पीछे हमारा नॉलेज है. तो वो तो हम जानते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें जिसके बारे में हमारा नॉलेज नहीं है, और अगर हम थोड़ा पीछे हटके अपने दिमाग में एक तरीके से घुसकर सोचें कि अच्छा, ये जो हम जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उसके बीच में क्या गैप है, क्या अंतर है, उसको समझें. जो नहीं जानते हैं वो क्यों नहीं जानते हैं, जो जानते हैं वो क्यों जानते हैं. अगर इन चीजों के बारे में सोचेंगे तो वो जो प्रक्रिया है वो मेटाकॉग्निशन है. वो बीच में संज्ञान करने की, अपने बारे में जो सोचने की बात है, वो मेटाकॉग्निशन है. एक एग्जाम्पल मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ. ये है कि मान लीजिए कि आपने क्लास में, जब उन्होंने कहा कि भाई क्लास में जब आप अपने क्लास के बारे में सोचते हैं तो आपको क्या चीज दिमाग में आती है, तो आप लोगों ने कहा कि स्टूडेंट्स बैठे हुए आते हैं, वो दिख रहा है. एक चीज जो आपके दिमाग में नहीं आती है वो है टीचर का ज्ञान कितना गहरा है. वो आपके दिमाग में नहीं आती है. तो जो दिमाग में नहीं आया टीचर का ज्ञान के बारे में आपको, और टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसके बारे में, उसके बीच में जो गैप है उसको अगर सोचिए, अपने दिमाग में पीछे जाके सोचिए, तो आपको पता लगेगा कि अच्छा, वो इतना अच्छा इसलिए पढ़ा रहे हैं कि उनका ज्ञान बहुत गहरा है. और जब आप इस चीज को समझ जाएंगे तो आपको उस टीचर के प्रति और आदर बढ़ेगा. उसके साथ ही
शायद आप भी सोचें कि मेरा ज्ञान भी काश इतना गहरा हो। तो ये जो सोचने की प्रक्रिया है उसको हम मेटाकॉग्निशन बोलते हैं। और वो जरूरी क्यों है, आपके लिए क्यों जरूरी है? तो इसलिए जरूरी है कि अगर अभी से आप चीज को सीखेंगे तो आप उस गैप को समझेंगे, या जिस आयाम को, जिस डायमेंशन को आप नहीं समझ पाए हैं उसमें जाकर आप सोचेंगे, थोड़ा दिमाग में पीछे जाकर सोचेंगे तो आपको नई चीज पता चलेगी। जैसे उस प्रोफेसर के या टीचर के नॉलेज के गहराई के बारे में जब आपको पता चलेगी तो आपका जीवन भी वैसा गहरा होना चाहेगा, आपका नॉलेज भी उतना गहरा होना चाहेगा। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, इसीलिए इसकी जरूरत है। हम ये कहना चाहते हैं, ये एकदम से पीछे की चीज नहीं है, ये एकदम केवल सोचने की बात नहीं या कहने की बात नहीं है, ये उसका बहुत ही व्यावहारिक उपयोग आपके लिए है। अगर आप वो दोनों के अंतर को समझें कि आपको क्या पता है और क्या नहीं पता है, उसमें क्या गैप है, अगर उसको आप एनालाइज करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे तो आपको बड़ा फायदा होगा, क्योंकि आप उससे आगे बढ़ेंगे। प्रतिमा जी, आई थिंक आई एक्सप्लेन दैट। Yes, sir. Very much. Very, very clearly and very crisp with very good examples. Thank you, sir. Thank you so much. So let me go forward and understand, get deeper into the entire metacognitive process as such. So there are two branches. Whenever you right now understood what is metacognition, it is very, very detailed. Thank you, Tiwari. It is very, very crisp and very apt. So once we understand metacognition, क्या है metacognition? आपको पता होगा कि thinking about thinking is called metacognition. क्या पता है, क्या नहीं पता है, और इसका gap क्या है? After this, we will have to understand that there are two branches. One is metacognitive knowledge and another is metacognitive control. We also call metacognitive control as self-regulation. Okay, metacognitive self-regulation भी मानते हैं और बोलते हैं। क्या है metacognitive knowledge? First branch के बारे में, knowing what you know, that is declarative knowledge. That first I asked you the question, when did we get that? When did India fight its first war of Indian independence? 1857. ये fact था, ये information था. It was declarative knowledge. I have already studied this. मैं पढ़ा हुआ हूँ और पढ़ते वक्त हमको ओके क्या हुआ था, किसने किया था और क्या हुआ, everything about anything about the history, the science, about the concept. The conceptual knowledge is called declarative. I know that it has already been declared. There are proofs for it. Declarative knowledge. That is part of a metacognitive knowledge which has got crystallized. It's already being in the memory. Next, understanding how to approach the task and problem. Say for instance, one is in the science or in the history or in the geography, biology, all these subjects, you have facts, you have information. So you have a specific way to approach the entire subject, understand what it is, because it's being taught in your classroom, which is already being there. The concept is already in your mind, it's declared, it's already done. It is set written. But there are few things which you have to understand how to approach the task and problems. If I say that I'll give you a logical question. If I say 1, comma A, comma 2, comma B, comma 3, what will be the next, next in the series? I repeat, if I say, I'll just mention, I'm putting it across in the chat box. Please have a look at it. If I say 1, comma A, comma 2, comma B, comma 3, what will be the next letter? Please see it in the chat box. If I say 1A, 2B, this is the next letter. See, absolutely. Yes, sir. Thank you so much. If I say 2, comma 4, comma, this is the next one. Absolutely. Brilliant. Next, if I say 4, comma, then 9, comma, then 16, which is the next number?
is the next number? 4 comma 16. Absolutely. Brilliant. Brilliant. No, 16, Raj, because answer is right. So this is more of a square. 2 square, 3 square, 4 square, etc. Okay. So the question. So what am I trying to make you understand, and my dear soul, here is you understood there is a pattern, there is a task, there is a pattern, there is a problem, and you try to analyze what is the relationship between this number to this number? What is the relationship between 1 and 8? This is first number, this is first letter. This is the second number, this is the second letter. So you started understanding there is a pattern. You understood there is an approach to solve this problem. This problem is procedural knowledge. One is declarative knowledge, which is more of the facts and the information and the figures. Next is understanding how to approach a task. And the problem is dependent on what is the problem, looking at the pattern, looking at what exactly is it the relation between one first and second, and then understanding that you went through a procedure. This is called the procedural knowledge. For example, being aware that you struggle with remembering names. Okay, for instance, you find it very difficult to remember some names. So what you will do? Okay, you will do a mnemonic. You will say that, okay, I will say I want to understand all the colors of the rainbow. Rainbow colors क्या होते हैं? 7 colors होती है. So I want to remember all that. मुझे पता नहीं कि क्या करें. So I make it as a mnemonic or an acronym which is called violet, indigo, blue, yellow, orange, red, and yeah, so all the 7 colors. Okay, so I made it as a desire and I understood. In the similar way, I want to remember the planets in the solar system. I will do an acronym. I want to understand some sequence. I make a mnemonic to make it as a very short term, and then I start to remember. These are all the techniques to remember, so that this technique is the mathematical. I think about one word which I can elaborate and answer entire question. Answer the whatever the fact and information is, or whatever I do, whatever the technique that I'm going to use will also help me solve any problem, understand the pattern, and how exactly should I crack it. This is metacognitive knowledge. Okay. Now I'll take a pause, and I think Karunji, please take over. Am I there? Hello? Yuvali ji, you are mute. No, no, no. Yeah, I was mute and I could not hear well. There's something here in my phone. Hold on a minute. या मेरे ख्याल से मैंने पूरा सुना तो नहीं, लेकिन जो अंत में मुझे सुनाई दिया प्रतिमा जी, आप ये कहना चाहती हैं, और सही कीजिएगा अगर हम गलत बोल रहे हो तो, वी कैन ऑलवेज एनालाइज दिस एंड एक्सप्लेन दिस बेटर। वो ये है कि जो हमारी हम जैसे ये जो सवाल पूछे गए ना कि किसके बाद क्या होगा, 2 नंबर दिए, 3 नंबर दिए गए, चौथा नंबर क्या होगा, तो ये जो हम सोचते हैं ये चीजें, तो हम पहले अपने मन में एक पिक्चर जैसा बनाते हैं, न्यूमोनिक बोल रही हैं प्रतिमा जी, और सोचते हैं कि अच्छा ये 4 और 9 के बीच में क्या सिमिलर है, क्या कॉमन है, और 9 और 16 के बीच में क्या कॉमन है। इस तरीके से एक सीरीज जैसा अपने दिमाग में सोचते हैं। वो जो प्रोसेस है उसकी बात वो कर रही थी। अगर हम कहें ए सी और सी के बाद हम कहें ई, तो उसके बाद पूछें कि अच्छा उसके बाद का अक्षर क्या होगा, तो आप शायद सोच के बताएं कि अच्छा उनके बीच में एक अक्षर हम छोड़ रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस आपके दिमाग में चलता है, ये जो प्रक्रिया आपका दिमाग सोचता है, उसके बारे में प्रतिमा जी बता रहे हैं। I don't know, Pratima ji, if I captured all because I was at a disabled state. No problem, sir. Yes, you captured more or less the crux of the entire answer. I'll continue. I'll elaborate that as well. Okay. So metacognitive knowledge is one is I know whatever I have already studied as a concept. Next is I will try to analyze the current problem and then try to crack it. So let me come to the second branch of metacognitive control.
तो क्या होता है कि मेटाकॉग्निटिव कंट्रोल पे actively regulating and monitoring your cognitive process. What am I thinking? What am I doing? Am I seeing? Am I in doubt? Am I not understanding? Am I having too many questions in my mind? Am I already somebody where the teacher is actually teaching me, but I'm not here? I am already, uh, physically present, mentally absent. First of all, you will have to understand where are you currently, where is your thought process. हम क्या सोच रहे हैं, हम दिमाग कहाँ पर लग रहा है, am I understanding or am not understanding, too many doubts I have, और क्या हो रहा है हमारे दिमाग पे. तो ये मेटाकॉग्निटिव कंट्रोल होता है. It involves the kind of planning, monitoring, and evaluating your own thinking. Where am I? What am I doing? How shall I go ahead and answer this question? ये पूछ रही थी कि okay, when did the first war of Indian independence happen? क्या हो रहा था आपके दिमाग में? क्या क्या visuals आए और किस मंगल पांडे आए दिवाली दिवाली के मन में और आंसर बोली के ने भगत सिंह के बारे में सोच रही थी. So there were few things that you were able to think, and you just need to catch that particular aspect that yeah, I was actually thinking of Bhagat Singh. I was, I never asked Mangal Pandey, but he mentioned saying that okay, I thought of Mangal Pandey. What happened during that time? And when you thought about classroom, what and all do you think, and what and all do you not think about? These are some of the things where I will have to capture, deciding on how should I do about it. So I will take, I will go further into it, but you will definitely understand about the entire approach. It is about how am I progressing into the entire subject. Is a metacognitive control. क्या होता है कि एक गाड़ी में एक्सिलरेटर होता है. So accelerator क्या काम करती है? You will have to regulate the speed of the vehicle, and that is the reason you will have to understand the concept of accelerator so that you understand where do I speed up, where do I control it, so that I don't commit an accident, so that you will understand what is the distance between the two vehicles, speed up whenever you require, or you will say that no, I'm not going to speed up, there is a lot of congestion. You can take the control of it only when you know what will the accelerator in your vehicle do. Accelerator क्या होता है? गाड़ी पे क्लच होता है, ब्रेक होता है और एक्सेलरेट होता है. So you should know the function of each of these controls so that you use that in the right magnitude. That is metacognitive control. One is metacognitive knowledge, is knowing what it is and then controlling it depending on what I know about it. That is the two branches of the metacognitive knowledge and control. You cannot control without knowing, or you cannot know without controlling. So both of them are the two faces of the same coin. Yeah, this is the one. Tiwari ji, please take over. या मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ और समझाने की. जो दो ब्रांचेज हैं वो है नॉलेज, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज और मेटाकॉग्निटिव कंट्रोल. तो नॉलेज के बारे में तो बताया, कंट्रोल के बारे में बताया. तो एक बड़ा अच्छा एग्जांपल प्रतिमा जी ने दिया कि कार में एक्सेलरेटर है, क्लच है, ब्रेक है. तो ये कार को कंट्रोल करने की है. आपको कार का नॉलेज तो है, लेकिन ये जो उसके इक्विपमेंट है उसका नॉलेज अगर आपको हो तो आप अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं. एक्सेलरेटर का क्या काम है, अगर ये आपको पता होगा तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं. तो आप अपने नॉलेज को उसके मुताबिक बढ़ा सकते हैं. तो अगर आपके पास वो जो कंट्रोल्स हैं, कैसे प्लान करेंगे, कैसे उसको मॉनिटर करेंगे, कैसे इवैल्यूएट करेंगे, ये सब चीजें जब आपको पता होगा तो आप उसको अपने मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं. तो मेरे ख्याल से यही प्रतिमा जी कहना चाहती थी. तो याद रखना है कि नॉलेज एक चीज है, लेकिन नॉलेज के अलावा जो और भी बहुत जरूरी चीज है उस कंट्रोल, वो है कंट्रोल. तो किस तरीके से दोनों को मिला के हम आगे बढ़े, ये सोचना है. करेक्ट, एब्सोल्युटली. थैंक यू तिवारी जी, थैंक यू सो मच. तो आगे बढ़ते हैं. So you will do your best when you know what to do and why are you doing. So आप थोड़ी देर के लिए ये सेंटेंस पे ध्यान कीजिए और try to understand the fact that you will do your best only when you know what to do. All of us know what to do, but it is very important to know why are you doing it. सभी
पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। और ये सब्जेक्ट हमारे लिए एक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। Why is it difficult for me? If science or mathematics, it's very difficult for me. Why is it difficult for me? That is one. Say for instance, I find it very difficult to talk. We have a webinar. I'm asking you questions, so you are unable to answer. आपको बहुत दिक्कत हो रही है. It's like I'm feeling very uneasy to answer this question. I know the answer. मुझे पता है कि आंसर क्या है, मगर मुझे पता नहीं कि कैसे आंसर करें, क्या आंसर करूं या ना करूं. बहुत अनईजी फील होता है. क्यों होता है? It is very very important for you to understand, my dear, that it is not about what to do. It is also important why am I feeling that? Why are you doing it? Or why are you finding this easy? Why are you finding something difficult? That is help you understand much better to fix the problem. For any problem to be fixed, it is not about understanding the problem. It is about understanding why did the problem happen at the first place. What is the problem? Fix the roots rather than fixing something else on the top of the tree. So that is where metacognition plays a very, very strong tool to fix the problems on why am I wondering, why I have questions, why am I finding it very easy, why am I finding it difficult. Math subject बहुत बहुत प्रॉब्लम है मैथ्स के लिए. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है. क्यों आपको लग रहा है कि मैथ्स बहुत कॉम्प्लेक्स है? Why are you not feeling that it is easy? Why are you not understanding? Are you not paying attention? Are you not able to understand the concept? Are you not able to relate to the concept? Where is the problem? Try to fix the problem at the base of it rather than tagging it saying that oh maths तो बहुत difficult है और teacher did not teach me properly. Question paper was very very difficult for me. It is not about question being difficult. It is about not teacher teaching you properly. You are not able to connect it. So if you go back and understand the fact that what made it difficult for you, why are you wondering, why are you feeling that it is difficult for me, is the problem. Understand the root of the problem is the metacognition. For all the students and for the teachers, a couple of them who are over here, it is important to understand to fix the problem at the problem stage, at the root of its problem, rather than going and taking too much of time and then later realize, okay, there is a problem. So metacognition helps you to understand where is the problem, why did it occur, and what made it to occur, and what can I do about it. All of them are connected to each other, and we can apply all of them to stage by stage methodology. So reread this statement, or मैं अनुरोध करूँगी कि तिवारी जी, if you can just kindly help me elaborate this. Yeah, so I'll take a moment here. I'll give a practical example, and that is, ये तो हम सब समझते हैं कि what is the problem, ये सबको पता है. प्रतिभा जी ने बहुत अच्छी तरह बताया कि हाँ ये तो आसान है, कि हाँ हमें ये बहुत प्रॉब्लम, मैथमेटिक्स बहुत कठिन होता है. क्यों कठिन होता है ये सोचना जो है वो उसका जड़ है. तब अगर उसकी जड़ को समझेंगे आप तो आप ज्यादा मेहनत करेंगे. जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर बड़ा कठिन है. क्यों कठिन है ये सोचिए. कठिन शायद इसलिए है कि कंप्यूटर की जो भाषा है, जिस तरीके से बोला जाता है, उसके जो टर्म्स हैं, उसको बोलने वाले आपके घर में नहीं है, या आपके अगल बगल नहीं है, या आपके पास कंप्यूटर नहीं है जिसको आप छू सके, समझ सके, देख सके. तो ये मैं एक साधारण सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि जब आपको पता चल जाए कि वो कारण है, तो उस कारण को आप सही करने की कोशिश करेंगे. आप अपने ऐसे दोस्त बनाएंगे जो कंप्यूटर के लैंग्वेज बोलते हैं, जो कंप्यूटर के टर्म्स बोलते हैं. तो जब इस तरीके के जो समस्या की जो जड़ है, उस जड़ को आप सोचेंगे, तब जाके आप अच्छा कर सकेंगे. आप जानते हैं, आपने कई मूवी देखी होगी, 3 इडियट्स हमारे दिमाग में आ रही है. उसमें बहुत हर बच्चे को कहा जाता है इंजीनियर बनो, इंजीनियर बनो, इंजीनियर बनो. आज भी हर बच्चे को कहा जाता है इंजीनियर बनो. तो आपको पता है, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हो गया, आपको पता है कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना है. व्हाट टू डू ये पता है आपको पता है. व्हेन यू नो व्हाट टू डू, इसमें जो लिखा है प्रतिमा जी ने बोर्ड पर या स्क्रीन पर, व्हेन यू नो व्हाट टू डू, यू नो व्हाट टू डू. आपको पता है आपको क्या करना है. आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है. वो कठिन है आपके लिए,
क्यों कठिन है इसके बारे में सोचिए। आपको याद होगा उस मूवी में, अगर देखिए आपने 3 इडियट्स, तो उसमें एक लड़का है जो फोटोग्राफर बनना चाहता है। वो अगर वो सोचे कि हमारे लिए इंजीनियरिंग क्यों कठिन है, तो सोचेगा अरे हमें तो हमारा दिल इसमें नहीं लगता, हमारा मन फोटोग्राफी में है। तो कठिनाई उसकी ये नहीं है कि उसको इंजीनियरिंग पढ़ना है, वो तेज है, पढ़ सकता है, लेकिन उसका मन नहीं लगता, उसके लिए कठिन है। क्यों? कि उसकी जड़ में ये है कि वो उसकी चीज नहीं है, वहाँ नहीं है। तो ये वाई वाली जो बात है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपके सामने कोई समस्या आती है तो आपको सोचना है कि क्यों ऐसा हुआ। और ये जो रिकॉग्निशन है, ये जो आत्म स्वीकृति है, वो मेटाकॉग्निशन है। इस चीज को समझना कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, और जब उस क्यों को आप समझेंगे तो उसका जवाब ठीक से दे पाएंगे, आपका जीवन ठीक हो, आप उस पर एक्ट कर पाए, उस जड़ को खत्म करने की कोशिश करेंगे। प्रतिमा जी। Awesome, awesome, sir. Absolutely, very, very balanced. So, should we leave this link and join the other link, or can I continue? No, let's leave this link and join the other link. Yes, please. Sir, if you can kindly help me, because I think that will be very helpful. So, I did explain it is important of what it is just not about what do I do, it is also about why am I doing what I do. So, we were over here. I'll just go forward and then explain you a little bit. So, in this metacognitive knowledge, the first branch itself, we have around the 3 different branches. Wherein you have to understand for the fact that there are few things to understand as knowledge of the person's variable. So this is the first branch. What exactly do I mean by it? It is more from an angle of the general knowledge about how I learn, okay? How I process my information, as well as the kind of an individual knowledge that I have, and what is the kind of a learning process. For instance, for example, being aware of where you should study and where you learn more effectively. For example, we all have different learners. I can be an audio learner. I can be a video learner. I can be हम कुछ सुन के सीख सकते हैं, और कुछ देख के सीख सकते हैं, और कुछ करके सीख सकते हैं. So you should understand how exactly am I learning. This is knowledge of the person's variable. Whenever you are studying, you should know what are you really good at. Am I somebody who's very sharp in by listening and understanding the thing? There are few students क्योंकि एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप का स्टूडेंट्स होते हैं कि सिर्फ सुनने से बहुत शार्प है और सुन के सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं. और एक ग्रुप है कि देख के बहुत शार्प होगा उसके माइंड, और देख के सीख सकते हैं. और कुछ ग्रुप सी है कि करके सीख सकते हैं. So you should understand, am I an audio learner? Am I a visual learner? Am I a kind of a kinesthetic learner? And what am I really sharp at? So is this something that I get it? I understand the things by writing very well. Okay, if I read 2 times and write 1 time, I feel very good. I understand it very clearly. Or I find geography very difficult. I find biology very difficult. I am not able to get digestive system. Can I write down the digestive system, see some video on the YouTube and interact with it, understand what it is? Or if I say, I have a friend of mine, or I have my parent, I have my mother who can read it to me, or I have my elder sister or a younger brother, I will just tell them, why don't you please go ahead, read this for me, I will listen to you and I will learn. So am I listening and learning, or am I seeing and learning, or am I doing it and learning? So first of all, we need to understand where should I be studying more time, where I am finding it very difficult. So it is more of the knowledge of the person's variable. Each one of us are very different. All of us are very different. We find very easy English or language. बहुत easy होता है, एग्जैक्ट बहुत easy होता है, मगर साइंस बहुत दिक्कत है. It's very very difficult. How am I going to do in science? Am I finding it physics, chemistry or biology?
in that chapter, is derivatives very problematic, or what is exactly the problem? This is exactly the knowledge of the person's variables. You go inside, dig it to such a level that you pinpoint where am I finding it difficult? Am I going to spend more time in understanding? This is one part. Next is the task. What am I going to do the task? Like say for instance, when I read a novel, when I read a story, it is very easy for me to read a story, understand the story, because I'm applying emotions to it. But when it comes to understanding the science concept, understanding electromagnetism, understanding what is heredity, understanding what is the chemical process of evaporation, or the kind of the kind of the different Fahrenheit to centigrade, etc. I need to understand that particular concept. I'm finding it very difficult. So the time taken to understand the concept is definitely lot more than reading a story. This is task. What is the task which is finding very difficult for me? How long am I taking it? What is very demanding for me? This is task variable. So क्या काम कर सकते, क्या काम कर रहे हैं, और क्या उसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, और कितने वक्त में हमको ये समझ में आ रहा है. This is the second part of it. The third part of it is the strategy variable, wherein the knowledge about what is the approach, what and what it means for me to do around it, with the kind of the conditional knowledge of what I have. If I want to remember the 7 colors of the rainbow with where I will apply an acronym, I will apply a mnemonic to remember the things. This is a strategy. Okay, in a similar way, I want to remember, the history of an Indian independence. 1857 से क्या हुआ था, 1919 से क्या हुआ था, first war, when did it happen, and when it comes to the kind of Gandhi march, when did it happen. So you can make a map. Okay, you can make a mind map out of it. This is a strategy to remember things. In a similar way, I want to understand what is circulatory system. I want to understand the biology, heart क्या होता है, circulation क्या होती है, और ब्लड के बारे में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में हम पढ़ते हैं. क्या है उस कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैप लगा सकते हैं. दिस इज अ स्ट्रेटजी टू रिमेम्बर फ्यू थिंग्स एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. आई एम ट्राइंग टू गिव यू example from history, from biology, the kind of a science, all of these examples, various different examples, to remember how am I understanding it, and also how am I trying to know this stuff and apply it also, because at the end of the day आपको reproduce करना है, आपको एग्जाम जाके ये सब कुछ लिखना है और इफेक्टिवली लिखना है. क्या कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं, और क्या प्रॉब्लम है, कितने वक्त लगेंगे, और लिख के बता सकते हैं या लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इज राइटिंग गोइंग टू हेल्प मी अ लॉट. यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफिकल्ट, how are you going to crack it. First of all, understand the problem. Is it a task problem, is it your problem, or are you supposed to apply the strategy depending on, is it the strategy or the kind apply the strategy depending on your task or the kind of what learning style you have. This is the metacognitive knowledge in the 3 divisions. I think Tiwari ji, I hope I was clear about it. You are very clear about it. I'm not clear about it because I'm not a psychologist. I'll do my best. No, you are doing the best. You are doing brilliant. Trust me, it's a sincere compliment. I'm 100% sure you can just help me. So let me try my best. So प्रतिमा जी का कहना है कि मेटाकॉग्निशन जो है, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज जो है, उसके 3 वेरिएबल है. एक तो आपका अपना व्यक्तिगत वेरिएबल है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, वो पहला वेरिएबल है. आपका व्यक्तित्व कैसा है, इसका मतलब कि मान लीजिए कि आप किसी ऐसे वातावरण में हैं, जैसे कोई म्यूजिक के वातावरण में, किसका फादर म्यूजिशियन है, तो उस वातावरण में उसका नॉलेज उस बारे में बहुत डीप है, तो वो एक वेरिएबल है, जल्दी से म्यूजिक सीख सकता है. तो एक वेरिएबल वो है आदमी का व्यक्तिगत वेरिएबल. दूसरा जो है वो टास्क वेरिएबल, जो काम उसके सामने है, वो दूसरा वेरिएबल है. उसको अपने बैकग्राउंड के मुताबिक उसको किस तरीके से उस टास्क में अप्लाई करेगा.
और क्या टास्क है, उसमें कठिनाई होगी, आसानी होगी, ये सोचना है। और जो तीसरी चीज है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो कहना है कि अच्छा मेरा व्यक्तित्व में ये खराबी है या अच्छाई है, टास्क हमारा ये है, और किस तरीके से उस टास्क को अचीव करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए हम कौन सा टेक्निक उपयोग करें, कौन सा स्ट्रेटेजी अप्लाई करें। है एक एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कि अभी प्रतिभा जी ने बताया कि जैसे आपको भाषा सीखनी है, हिंदी सीखनी है, तो हिंदी सीखने का जो तरीका है वो आप जानते हैं। अगर आप हिंदी बोलते हैं, बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, तो वो और आपके अगल बगल आपका परिवार हिंदी बोलता है, तो आपके लिए हिंदी सीखना आसान होगा। लेकिन अगर आपका टास्क साइंस का इम्तिहान देना है, तो आपको शायद उसमें कठिनाई होगी। तब आपको ये सोचना होगा कि उस टास्क को अचीव करने के लिए आप कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करें। तो ये तीनों चीजें समझनी है। आपका व्यक्तित्व का जो बैकग्राउंड है, जो पृष्ठभूमि है आपकी, वो जो टास्क आपके सामने है वो, और चूंकि टास्क को अचीव करना है, तो उसके लिए आप कौन सा स्ट्रैटेजी उपयोग में लाएंगे, क्या क्या करेंगे आप, वो आपको सोचना है। पहले होता था, जैसे मान लीजिए कि पहले होता था कि जब आपको पढ़ना है, तो पढ़ने का मतलब होता था किताब खोल के सर नीचे करके पढ़ते रहो। ओके, वो क्या आज भी स्ट्रैटेजी काम करती है, ये सोचना है। आप बहुत अच्छा पढ़ते थे, क्या साइंस भी वैसे पढ़ सकते हैं? कविताएं पढ़ते थे तो कविताओं को रट के पढ़ते थे, वो एक तरीका था यूज करने का। क्या स्ट्रैटेजी वो साइंस में भी यूज की जा सकती है, ये सोचना है। तो तीन वेरिएबल जो है, आपका व्यक्तित्व, आपके सामने जो टास्क है वो, और उस टास्क को अचीव करने के लिए अपने व्यक्तित्व के आधार पर आप कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, वो, ये तीन चीजों का ख्याल रखना है। प्रतिभा जी। Absolutely, sir. Bang on. Very, very nice. Very nice. Thank you, sir. You are no less a psychologist, let me tell you. प्रतिमा जी, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। Sure, sir. नॉलेज टास्क जो आपने बताया, उसका एक उदाहरण है, कुछ लोग वेद और भगवत गीता पढ़ते हैं जिसमें नॉलेज है लेकिन स्टोरी नहीं है, और स्टोरी पुराण में है। इसीलिए हमारे लोगों ने पुराण की लिखा ताकि कहानी के रूप में आप उसको समझ सकें, और वो नॉलेज जो भी है वेद और उपनिषद और भगवत गीता में, वो कहानी के थ्रू आप अपने जीवन में ला सकें। इसको यूज करते हुए जो टास्क आपको है, जो भारी लगता है, वो उसको अगर किसी तरह कहानी बना करके अपने दिमाग में बैठा है तो बहुत दिन तक याद रहेगा। अब रेस्पेक्ट टू यू प्रतिमा जी। Sure, sir. Thank you. Thank you so much. I'll just go take it forward because this is going to be interesting for all the students and teachers out here. Okay. So with that, let's move to the next one, particularly for students and the teachers over here. How can students use this concept? क्या कर सकते हैं? मेटाकॉग्निशन के बारे में हमको पता है। Thinking about thinking is metacognition. I know what is metacognitive knowledge. I know what is metacognitive control. क्या variables होता है, सबको सब पता है मुझे। Awesome, great. But एक विद्यार्थी, मैं कैसे यूज करूँ? एक कॉन्सेप्ट हमको क्या करना है इस पे? So how can students or teachers can use this concept in the classroom and learning this, particularly for all of you? This is customized for you. First of all, understand, actively regulate your own thinking process and acquisition. And what do you mean by comprehension is understanding of the new knowledge. What is the new knowledge that what? Today morning I did not know what is electromagnetism. Today morning I did not know some mathematical concept of what is a plus b whole square. I got to know one day. This was a new knowledge today. I did not know something. At the end of the day, I got to know something new today. I learned something new today, learning strategies. If I want to understand the concept, then it is called study strategy. So you need to understand, knowing that what exactly am I trying to understand. So there is a series of behavior that we have got it that can be and need to be taught. First of all, these behaviors are very interpreted as something which is intelligent. So intelligent है वो, कोई intelligent या बुद्धिमान या it is not, they are very smart and they are not very smart, ये concept नहीं है. मगर
स्मार्ट के बारे में क्या है? All of you can become smart, my dear. What is the difference is you are not attentively looking at the problem, so you are thinking at the top of the problem. मुझे ये पता नहीं है, मुझे वो पता नहीं है, मुझे ये दिक्कत है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, टीचर नहीं आए थे और टीचर नहीं मुझे ये समझ में नहीं आया क्योंकि बहुत वो उसके कारण नहीं कर सके और क्वेश्चन पेपर बहुत प्रॉब्लमेटिक था, बहुत complex था. Yeah, these are all reasons. These are all symptoms. But what is the reason why are you not able to understand? First of all, even before you say question paper was very difficult, concept was very difficult. Why is it difficult? Is you did not understand that it was difficult. What made it difficult is something metacognition. That is what you need to understand. Very, very interesting thing to understand because this is something that if you can hold on to the problem, if you can hold to the root of the problem, trust me, all your problems just get very important for you to understand what is your behavior and catching yourself to say, ये मुझे problem है. It is not like okay मेरा एग्जाम मार्च पर आएगा, हम फरवरी पे निकलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. No, it is not like that. In the month of June or July, when the school starts, you will have to understand. मैं ये न्यू कॉन्सेप्ट था और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है. क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि एक when it comes to fractions or decimals, हम थर्ड स्टैंडर्ड से और फोर्थ स्टैंडर्ड से सीख सकते हैं और सिखा लेते हैं. I mean, you all will learn about fractions and decimals. If you don't understand the concept in the primary school, obviously I find it very difficult to add a decimal number, add fractions in 5th standard or 6th standard. क्या problem क्या था? Or did I not understand the foundation and the fundamental? This is something which is very important for us to understand. Fix the problem at the root of the problem and decide where is your learning issue. That is where the metacognition really lies forward. And I'll just go one step ahead as a part of the next slide and then give it to Shivariji and to translate this for you. What you need to understand, my dear, is as a continuation. If you are a student, you must first recognize, for all the teachers and the students also, you should recognize what is the difficulty. क्या problem है? Problem क्या है? और किधर है? और किस लिए problem है? Point number one, question number one. Question number two, learning strategy क्या होना चाहिए? am I an audio learner? Am I a visual learner? हम सुन के सीख सकते हैं या देख के सीख सकते हैं और करके सीख सकते हैं. क्या हमारी लर्निंग स्ट्रेटजी क्या है? हाउ कैन आई लर्न इट रियली वेरी वेल? और प्रैक्टिस कितने बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा? क्यों दिक्कत है मुझे? सो what is this underlying note that you will have today? Summarize and keep questioning yourself. That is the second step. The third step is self-evaluation and self-regulation. Am I really satisfied with what I have learned? Do I really know what I want to know? If somebody asks me the question of what is electromagnetism or can you tell me how does digestive system work? Can you tell me what happened in 1990? जलियन वाला बाग के बारे में ऐसे लिखना है. क्या हमें लिखना है? How confident like this? You just need to keep evaluating. So 3 tasks for you as a student. First, recognize problem क्या है. Okay, task level का complexity क्या है. Next is हम क्या कर सकते हैं इसके लिए. मुझे प्रॉब्लम पता है, प्रॉब्लम के बारे में पता है, प्रॉब्लम के कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पता है और क्या कर सकते हैं इसके बारे में. व्हाट इज योर लर्निंग स्ट्रेटजी फॉर इट? एंड डू आई वांट टू मेक नोट्स? डू आई वांट टू प्रैक्टिस इट once again? Do I want to read it 10 times? Do I want to close the book and then read it out for someone and ask people to ask me question and then I will answer it? What exactly is your strategy? There are tens of strategies to apply, but what are you trying to do? Next is, have I understood that concept really well, and am I able to reproduce if someone asks the question? These are the 3 things that you need to do. So this is exactly what I wanted to do. So I request Tiwari to take over. I will go back one slide before and then so that he can explain it better. Yes, sir. On to you. This is where I started. Okay. Yeah, the next, let me go to the next slide. Yes. Next slide. Yes, sir. On to you. Okay, good. All right. So
what I was, I think what, anyway, I should restrain myself to translating. हिंदी में बोलता हूँ, वो ये है कि प्रतिमा जी ने जो बताया वो 3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है कि आप रिकॉग्नाइज कीजिए, आप समझिए कि कठिनाई कहाँ है, टास्क लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी कितना कठिन है, ज्यादा कठिन है, कम कठिन है, उस कठिनाई का जो लेवल है उसको समझिए। अगर बहुत ज्यादा कठिन है तो उसके लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा, कोई और स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी। अगर कम कठिन है तो दूसरे तरीके की स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि पहले ये समझिए कि आपके लिए जो टास्क आपके सामने है वो कितना कठिन है। कंप्यूटर सीखने की बात मैंने बताई, आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था। दूसरी कई चीजें हैं ऐसे जो आपके लिए कठिन होगी, कुछ ज्यादा कठिन होगी, कुछ कम कठिन होगी। तो पहले वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है उसको समझिए। दूसरी चीज है कि उसके आधार पर आप समझिए इस बात को कि क्या हम करें उस कठिनाई को दूर करने के लिए, हमारी लर्निंग स्ट्रेटेजी क्या हो। मान लीजिए कि आपको इम्तहान देना है, आपको अंग्रेजी बोलने का इम्तहान देना है, अंग्रेजी का इम्तहान देना है। अगर वो आप देखते हैं कि आपके लिए बोलना कठिन है या शब्दों को समझना कठिन है, या जब लोग बोलते हैं तो उसका रेफरेंस समझना कठिन है, तो आप क्या करेंगे? आप अगर किताब पढ़ेंगे रोज रोज सर नीचे करके तो शायद उससे वो स्ट्रेटेजी आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप अंग्रेजी में टीवी देखेंगे, न्यूज देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस रेफरेंस में कौन सा शब्द उपयोग हो रहा है और आप उस शब्द का सही मतलब समझ सके, उसकी उपयोगिता समझ सके। तो लर्निंग स्ट्रेटेजी जो है उसका मतलब, लर्निंग का मतलब ये नहीं होता है कि किताब को घोटते रहिए। लर्निंग का मतलब होता है सीखिए, और सीखने के कई तरीके हो सकते हैं। आप यूट्यूब देखें, आप टीवी देखें, आप टीचर से बात करें, आप अपने दोस्तों से बात करें। तो ये सारी स्ट्रेटेजी जो है आपको सोचनी पड़ेगी कि हमारी डिफिकल्टी इतनी है और उसके लिए हमको ये स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी। कई चीजों में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, किताब खोल के पढ़ना पड़ेगा। कई चीजों में वो सही स्ट्रेटेजी नहीं होगी। आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारी जो कठिनाई है और कठिनाई का जो स्तर है, उस स्तर को ठीक करने के लिए हम कौन सा स्ट्रेटेजी उपयोग करें। और जो तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है वो है सेल्फ इवैल्यूएट एंड सेल्फ रेगुलेट। अपना इवैल्यूएशन आप खुद कीजिए, ईमानदारी से आप ये सोचिए कि आप जो कर रहे हैं उसका फायदा हो रहा है या नहीं। ईमानदारी से, ये नहीं कि अपने खुश हो गए, बल्कि सोचिए कि अच्छा हम इसमें हम कमजोर हैं और ये हम नहीं कर पा रहे हैं, हमको अपना स्ट्रेटेजी बदलना पड़ेगा। और उसके आधार पर सेल्फ रेगुलेट, वो अपना रेगुलेट कीजिए, अपना बदलिए उस। तो ये जो रेगुलेशन है आपको अपना ही कंट्रोल करके उसको बदलना है, क्योंकि आपने इवैल्यूएट किया है कि आपका हो नहीं रहा है। मैंने आज सुबह में जब मैं पढ़ा रहा था अंग्रेजी, मैं अंग्रेजी बोलना सिखाता हूँ बच्चों को, तो एक बहुत ही स्टूडेंट है जो कि अभी एलिमेंट्री स्टेज में है। तो उससे मैंने पूछा कि बेटा आप 1 साल से पढ़ रहे हो हमसे, आपको कोई फायदा है? तो मैं अपने को सेल्फ इवैल्यूएट कर रहा था। उसने बताया कि हाँ सर फायदा है। क्या फायदा है? उसने बताया कि वो काम करती है एज ए नर्सिंग असिस्टेंट हॉस्पिटल। तो पहले वो दवाई का नाम नहीं पढ़ पाती थी। नाउ शी कैन रीड द लेबल ऑन द वाइल्स। आई थिंक दैट्स अ बिग अचीवमेंट। सो द पॉइंट इज, वो स्ट्रेटेजी जो भी हमने लगाई है सिखाने के लिए या उसने सीखने के लिए, उसका एक फायदा है। तो इस तरीके से आपको अपने को इवैल्यूएट करते रहना है। कहने का मतलब है कि सतत जो भी आदमी आगे बढ़ना चाहता है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, उसको ये हमेशा सोचना चाहिए कि अच्छा किस चीज में मुझे कठिनाई है, उसके लिए हम क्या तरीका अपनाएं, स्ट्रैटेजी, और उसके बाद उस तरीके को समय समय पर, हर महीने, हर हफ्ते, हर 6 महीने पर इवैल्यूएट करें कि हम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ठीक नहीं कर रहे हैं तो कैसे उसको रेगुलेट करें, या अगर ठीक कर रहे हैं तो कैसे उसको बढ़ाएं। तो ये सब, ये 3 स्टेजेस को हमेशा सोचते रहना है। अब इस तरीके से जीवन में आपका विकास होता है। ओवर टू प्रतिमा। Sure, sir. Thank you. Thank you so much. So let's move forward. And this is a very important thing. I will take minutes to go through. Let's start from the planning.
I'm a student. I do not know. Okay, I understood your metacognition. So I'm trying to help you with various different steps. So basically, there are totally 6 steps. Starts from the planning part. Okay. So while you are planning any subject, I understand what is the difficulty of the subject. I understand what is the learning strategy. I will also how do I make into bits and pieces? How do I segregate? How do I make it very very crisp and clear? I understand. Tell me bulleted point. Give me ingredients. क्या बनना है? क्या करना है? हर step में क्या करना है? This is the slide for you. This is a great slide with a lot of information for you. So first you need to plan. What do you need to plan? There is a problem of self-determination. What is the goal setting? क्या करना है? टाइम के बारे में टाइम मैनेजमेंट क्या होता है और मेरा स्ट्रेंथ क्या है मेरा वीकनेस क्या है तो ये प्लानिंग पे होता है एंड अंडरस्टैंडिंग वेयर एम आई करेंटली दैट मीन्स द प्लानिंग स्टेज next is focused attention there is a attention problem I am not able to focus fine I will all plan very well I need to study this I need to complete this strategy I understand this is difficulty I have a learning strategy great but I'm not able to focus. So what do I do? What do I do with it? It is selective attention. Am I having a problem with selective attention? How long am I able to be very, very attentive? Is it that I am very attentive while I'm studying English or Hindi? Or easy also? क्यों easy है? Am I very focused in that? Why am I finding it? Why am I finding it easy? मुझे टीचर तो बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए सब्जेक्ट और लैंग्वेज भी बहुत अच्छा also be one of the reasons. Focused attention is I don't like a teacher, so that's the reason I'm not spending time. First of all, understand what is the focused attention part, right? And be very selective. Come to the problem point. Where exactly are you finding it? Are you not understanding and relating, or is that I have not learned it properly in the primary stage? What is that? I don't have a connection on it, so that I'm not able to build it further. This is focused attention. What is where should I focus on? Just be very clear. Saying that okay, even if I want to focus, I can only focus for half an hour. Study for half an hour. आधे घंटे के लिए पढ़ाई कीजिए. Take a break and then again start once again. Next is I'm able to focus, but I'm unable to understand. For which you need to translate. Okay. This भाषा में, like say for instance right now, I'm explaining it in English and Tiwari ji आपके लिए हिंदी में translate कर रहे हैं. So this is translation so that it is very effective, so that you understand it. This is one of the strategies. Can we combine both of them? मैं English में भी बात कर रही हूँ और हिंदी में भी बात कर रही हूँ. I'm combining both of them so that you can relate to the concept very well. And try to compare, giving you examples. उदाहरण दे रहे हैं और different examples के जरिए आपको बता रहे हैं कि हम क्या सीख सकते हैं and elaboratively explain कर रहे हैं. This is also information, managing the information and analyzing. How is it I'm able to understand and step by step store the things. This is the third step. The fourth step, the memory process. How do I remember things? One is I am not able to, I understand. But when I understand, during the test, during the examination, I am not able to retrieve it. I am not able to reproduce it. Where am I finding it difficult? Tension हो रहा है या सब कुछ भूल गई मैं? क्या problem है? So one is memory process. You need to analyze the memory. Is it a controlling memory or can I use different memory techniques to remember? Is it just that I remember only when I'm studying and after that I forget everything? What is the memory process? This is the problem with respect to memory. Is it a memory? Is it the planning problem? Is it an attention problem that is focused? Is it more of information? I'm not able to assimilate the entire concept or the information. Or is it I'm able to understand everything but I'm not able to remember anything? Is it that problem? So next can be the monitoring. Monitoring क्या होता है? मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेमोरी के लिए प्रॉब्लम नहीं है. आज पढ़ाई कर चुकी हूँ और कल टेस्ट दे चुकी हूँ, मगर एक हफ्ते बाद और एक महीने के बाद आप पूछ रहे तो हमको पता नहीं कि क्या हमने सीखा और क्या हमें रिप्रोड्यूस करना है, मुझे पता नहीं है. So one is the self question, the self talk.
Am I in the kind of very prospective? Am I able to remember it again and again? Like say for instance, जलियांवाला बाग और 1919 हम हमारे हाई स्कूल में पढ़े थे, जनरल डायर के बारे में पढ़े थे, और ये कैसे याद होगा? This is more of a monitoring part of it. Am I able to remember on a constant, on a long run, whether it is this month or during the examination in the month of March? How am I able to practice? And where would I lose out? After 1 month I lose out everything. After महीने के बाद क्या होता है कि बहुत डाइल्यूट हो जाता है मेमोरी, और क्या करना चाहिए? So self questioning, can I reread it once again, spend lesser time to again connect the dots? This is monitoring part. At last but not the least, the last step, the sixth step is wherein it is self checking. Where am I committing mistakes? Mistakes किधर हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम कैसे correct कर सकते हैं, or the kind of the self review. Okay, it is one word actually. It is self review, and also understanding how do I debug those problems and get into the root of the problems and fix it. So first, in the entire study, please understand, my dear, is it a planning problem? Is it attention problem? Is it just that I am unable to understand at all? Information manage नहीं हो रहा है, मुझे analyze नहीं करना आता है, और translate भी करना नहीं आता है. So what strategy should I be doing it? After understanding it, I am unable to recall. I am unable to reproduce the things. मुझे याद नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम है. या ओके, याद नहीं आ रहा है, मगर एक दिन के लिए होगा और एक हफ्ते के लिए होगा, मगर 2 महीने के बाद डाइल्यूट हो जाता है. तो क्या कर सकते हैं? मॉनिटरिंग द एंटायर एस्पेक्ट. एट लास्ट द काइंड ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन, कहाँ हम मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्यों मिस्टेक हुआ, whether was it more of a attention, and then fix that problem. But first of all, understand where is your problem and try to fix that particular problem in these 6 different steps. This is where this is a very important slide, very interesting slide, which will help you a lot. So you should be able to recognize your problems, and this is like a menu card for you to tell you where is the problem, catch hold of the problem. Yes, sir. Yes, Tiwari ji. On to you. I'll just take a few minutes. Actually, it's very well done. Raj पूछ रहे हैं कि can I get this PowerPoint presentation? I think you can. It's not a problem, Raj. So as Raj probably want to say that this is very very important slide. Fatima ji also said क्योंकि आपके लेवल पर बच्चों और दूसरे लेवल पर टीचर्स भी I think it's very useful. जो हमने पहले कहा था 3 स्टेप्स, उसका ये इलाबोरेशन है. उसको किस तरीके से प्रैक्टिकल रूप में हम करें, उसको थोड़ा और नीचे जाके समझें, उसके लिए है ये स्लाइड. जो पहला है प्लानिंग, और प्लानिंग में सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ स्टीम, अपना गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, ये सब पीसेस हैं जिससे आप प्लान कर सकते हैं. मतलब अगर आपके पास सेल्फ डिटर्मिनेशन हो, अच्छा हमें पढ़ना है, हमें याद करना है, हमें साइंस पढ़ना है, हमें अंग्रेजी सीखनी है, हमें हवाई जहाज बनाना सीखना है, तो जो भी है उसके लिए आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपके अंदर एक दृढ़ प्रतिज्ञता होनी चाहिए जिससे आप आगे बढ़ सकें. उसके बाद आपकी हिम्मत होनी चाहिए, सेल्फ स्टीम होनी चाहिए. आप उसके अपने कमजोरी और अपनी मजबूती को एनालाइज करें, आप अपना गोल सेट करें और समझें कि आपको 1 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे, टाइम मैनेजमेंट करें. तो ये सब चीज प्लानिंग में आती है. आप प्लान करेंगे हमको ऐसे करना है. उसके बाद आपका अटेंशन उसको होना चाहिए. आप क्लास में बैठे हैं, आपको टीचर पढ़ा रहे हैं और आपकी चिंता लगी है कि आपकी माँ घर में बीमार है. How can you focus attention? You have no attention there, right? तो ये सोचना है कि अगर हमको पढ़ना है तो जहाँ भी वो लर्निंग हो रही है, आप भले ही टीवी से लर्न कर रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं या दूसरे किसी तरीके से लर्न कर रहे हैं, आपको सोचना होगा कि हमको वो उतना समय जो आपने दिया था ना टाइम मैनेजमेंट में, प्लानिंग में कि 1 घंटे लगाना है, वो 1 घंटे तक फोकस करना है. तो तीसरा स्टेप है वो है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट. जो टास्क आपके सामने है, याद है टास्क वाला स्लाइड, जो टास्क आपके सामने है वो टास्क जो भी आपको करना है उसको, और उसकी समझ आपको अगर नहीं है तो उसके कई तरीके हैं उस
उसको ठीक से समझने की, जैसे हम लोग यहाँ कर रहे हैं, हम लोग दोनों मिलकर कैसे उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, अलग अलग दे रहे हैं, उस पर एलाबोरेट कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो सब्जेक्ट मैटर है, जो भी आपको पढ़ना है या समझना है, उसको कई तरीकों से समझा जा सकता है। उसको स्लाइड से समझा जा सकता है, उस पर कोई यूट्यूब वीडियो है उसके बारे में जान के देखिए, उसका जो हिंदी में ट्रांसलेशन है या अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है उसको जाकर देखिए। तो इस तरीके से किस तरीके से उस पूरे इंफॉर्मेशन को, पूरा जो सब्जेक्ट है उसको हम समझ सकते हैं, उसकी जो प्रक्रिया, उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। वो केवल हिंदी से अंग्रेजी का ट्रांसलेशन नहीं, वो पूरा प्रक्रिया जो है उसके एनालिसिस का, एलाबोरेशन का, ये सारी प्रक्रिया जो है वो ट्रांसलेशन है। और दूसरा है कि आप उस चीज को आप कैसे याद रखें, जो अगला स्टेप है वो मेमोरी प्रोसेस, उसको कैसे याद रखें। एक साधारण सा एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर आपको जलियांवाला बाग याद रखना है तो 1919 में वो हुआ था, आपने एक बार पढ़ लिया है, उसको कैसे आप याद रखेंगे? 19 और 19 दो नंबर है, 19 और 19 दो बार, तो बस 19 याद रखिए। अगर आपको याद रहेगा कि अच्छा 2 बार 19 हुआ तो 19 याद रहेगा। तो एक जो भी तरीका आप निकालना चाहें, चाहे उसको उस तरीके से याद रखें या किसी दूसरे तरीके से याद रखें, वो तरीके जो है आपको याद रखने का, वो आपको खुद सोचना होगा कि किस तरीके से आपकी याददाश्त ज्यादा अच्छी रहती है। या तो आप विजुअल है, मतलब आप देखने से याद रखते हैं, या कई बार रिपीट करने से याद रखते हैं, या उन सबके कॉम्बिनेशन से याद रखते हैं। तो ये आपको सोचना होगा किस तरीके से हम कहानी में जब जाएं तो इस चीज को हम याद रखें। और जो बाद वाली चीज है उसके बाद, वो है जो पहले हमने बताया था ना, सेल्फ इवैल्यूएशन। तो याद है पहले वाला स्लाइड, वो सेल्फ इवैल्यूएशन वही है, सेल्फ क्वेश्चनिंग, सेल्फ टॉक। अपने आप में इवैल्यूएट कीजिए कि अच्छा हम जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन उसको हम ठीक से समझ पाए कि नहीं, हमने अटेंशन पे किया कि नहीं, हमने ठीक प्लानिंग किया था या नहीं, हमारा जो मेमोरी का तरीका है वो ठीक है, उसको इवैल्यूएट कीजिए। खुद ही आप क्वेश्चन कीजिए, अच्छा वो नहीं था, अच्छा ये था। इस तरीके से आप उसको इवैल्यूएट कीजिए, अपने से बात करके कीजिए कि अच्छा ये ठीक था, ये नहीं था। और उसके बाद का जो है, जो सबसे लास्ट वाला स्टेप है, वो एक सेल्फ चेकिंग। आप चेक कीजिए ठीक हुआ कि नहीं, आपकी कहाँ गलती थी, उसको ठीक कीजिए और उसको पूरी तरह रिव्यू कीजिए कि अच्छा ये हमारा जो पूरा सर्कल है सिस्टम का, प्लानिंग, अटेंशन, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, हमारा जो याद रखदाश्त की चीज है और अपना इवैल्यूएशन की चीज है, क्या वो सब काम किया या नहीं। अगर नहीं काम किया तो किस तरीके से उसको डिबग करेंगे या किस तरीके से उसको ठीक करेंगे। तो ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Thank you, sir. Thank you so much. That was very, very apt. Okay, let me just, it will not take too much of time. Let me move forward. We have almost come to the end of the slide. It's not about what we learn. It's also about he who learns but does not think is lost. I mean, I actually wanted to leave you all with this particular thought. We have come to the end of the entire presentation. So, I mean, I'm sure you all understand. It is not about क्या सीखना है. हम सभी सीखते हैं, मगर क्या सोचते हैं, सीख के क्या सोचते हैं, सीख के क्या करते हैं, उसका उपयोग क्या है. That's very, very important. And am I actually learning the right things? So that is very important. If he who learns but does not think at all, what is the use of your knowledge if you are not using it? What is the use of an idea if you are not implementing that idea? It is totally waste. So you can learn 100 different things. So subject मगर क्या करते हैं उससे और क्या दिमाग लगाते हैं और क्या सोचते हैं उसके बारे में, that is very important. Learning along with, any learning is totally waste when you don't think about the problem, when you don't implement the things, and you don't come up with the solutions. This is something which is very important for all the students over here, for all the teachers also. My humble request is, please encourage your students, encourage yourself. हम सभी सीख रहे हैं, मगर क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, and how deeply do you actually go ahead and think about it. That is also very important. It is more of what is the height of thinking, what is the width of the thinking, the depth of the thinking, all the three dimensions. So up, wider, and the deep. While you think, all of these three dimensions are very, very important.
as we learn, it should also make us think. Thinking is a very expensive thing. बहुत बहुत लोग दिमाग नहीं लगाते क्योंकि वो सोचते नहीं है. Any solutions, it needs to be thought. Anything, like say for instance, हम आपको मेटाकॉग्निशन के बारे में कुछ बताना चाहते थे. मेरे दिमाग में ये बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है. I was just thinking, how do I make you understand right now such a complex one? Can I start with the way that you can relate to the subject? I thought through this. What and all will be important for you? I thought through this. So it was very customized to the student. If you were somebody who's elder, metacognition is a very complex subject. I can give you a different set of things for the same concept. But for you, the kind of metacognition बारे में होता है, डिसीजन मेकिंग के बारे में होता है, कम्युनिकेशन के बारे में बहुत डिफरेंट टॉपिक है. So there are various different topics as a part of metacognition, but for students this is really important. I would humbly request all the students सीखने के parallelly आपको सोचना ही it's very important. सीख के आप सोचिए, बहुत important है. Or last but not the least, another one important thing that I would want to leave is it's more of we teach the students what to think, but not how to think. This is important. It is about metacognition. क्यों important है? क्योंकि आप सब कुछ सीख रहे हैं. It is great. But how do I think is metacognition? Metacognition is not about what I think. You already have learned it. All the teachers are teaching you what exactly should you be thinking. But how to think, how to crack a problem, how to come up with the answer, how to solve anything, how to solve your own problem. That is metacognition. This is what is all about that. And Tiwari ji, on to you. I think this is a great presentation, Pratima ji, and thank you so much for enlightening us. These two slides are very, very important. It's important to understand the कि thinking क्यों जरूरी है. आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आपके पास मैप है और मैप में आपको सारे रास्ते पता है. आपको पटना से, ज्यादा स्टूडेंट्स पटना के हैं यहाँ इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ, मैं तो बिहार के हैं. तो पटना से आपको दिल्ली जाना है और आपको पता है कई रास्ते हैं. आप आरा होके जा सकते हैं, आप गया से सासाराम होके जा सकते हैं, ग्रैंड ट्रंक लाइन से, आप जहाज से जा सकते हैं. तो आपको नॉलेज है, यू नो द रूट्स, यू नो द प्रोसेस, यू हैव द नॉलेज. बट व्हेन यू हैव टू गो, यू हैव टू थिंक व्हाट्स द बेस्ट वे टू गो. अगर आपके पास केवल एक दिन का समय है जाके आने का, then you probably want to take a plane. अगर आपको घूमना है तो आप पटना से गया जाएंगे, बोध गया देखेंगे, then you board the train and take Grand Trunk line and go to Delhi. If you are going directly, then you just take the direct train from Patna, Ara, Mughal Sarai and go to Delhi. So my point is कि जब think कीजिएगा तभी आप उस नॉलेज का फायदा उठा सकते हो. उस नॉलेज का लाभ नहीं है जब तक आप थिंक नहीं करते हो. तो आप देखोगे कि दुनिया में जिन्होंने भी थिंक किया है वो आगे बढ़े हैं. ये जितनी नई कंपनियां आप देख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट से लेके आज के अमेज़न और टेस्ला तक, इन्होंने थिंक किया है. नॉलेज था लेकिन वो थिंक किया है. अच्छा, बिजली से भी पावर निकलता है. क्या बिजली से वो पावर निकल सकता है जिससे कार बने? ये थिंकिंग है. क्या बिजली से वो पावर निकल सकता है कि ट्रेन चले? वो थिंकिंग है. तो नॉलेज तो है कि बिजली से पावर निकलता है, लेकिन उस पावर का उपयोग क्या कार चलाने में हो सकता है? ये नई थिंकिंग थी. तो इस तरीके से लोगों को पता था कि लोगों को सामान घर में चाहिए, लेकिन क्या ये सोचा गया कि किस तरीके से जल्दी सामान पूरी दुनिया में पहुंचाया जा सके? वो थिंकिंग है जो अमेज़न करता है. तो इस तरीके की चीजें थिंकिंग से होती है. दुनिया थिंकिंग से आगे बढ़ती है, नॉलेज से उसका बेसिस केवल बनता है. तो थिंकिंग बड़ी जरूरी है. आज के जितने इम्तिहान होते हैं, आपके नीट या जी या
एसएसबी या जितने भी यूपीएससी, सब में एक चीज की बड़ी जरूरत होती है, वो होती है क्रिटिकल थिंकिंग। वो क्रिटिकल नॉलेज नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग है। आप किस तरीके से उस नॉलेज को सोचते हैं, उसकी उपयोगिता के बारे में सोचते हैं, और कई बार जो एस्टैब्लिश तरीका है उससे बाहर जाके, जिसको थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स बोलते हैं, उससे बाहर जाके नया रास्ता ढूंढते हैं। ये सारे नए रास्ते हैं, देखिए। तो ये जो नया रास्ता ढूंढते हैं वो थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट स्लाइड जो आपने बताया कि हाउ टू थिंक, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर्स को खासकर ये सोचना चाहिए और स्टूडेंट्स को भी सोचना चाहिए कि किस तरीके से किसी चीज के बारे में हम सोचें। किस तरीके से सोचने का मतलब है कि अच्छा, तो जो अभी तक रास्ता बताया गया है क्या वही सही है, वो पहला स्टेप है। लेकिन क्या उसके अलावा भी कुछ हो सकता है, वो दूसरा स्टेप है। तो कई ऐसे तरीके हैं, और यहाँ जो लोग बैठे हैं उसमें से काफी लोग इसको जानते हैं कि एक स्क्वायर होता है, उसके बाहर भी जाके आप डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके की चीज है। मतलब कहने का मतलब है कि बाहर जो चीज नहीं सोची गई है उसको भी सोचने की कोशिश करनी चाहिए, वो बड़ा जरूरी है। हाउ टू थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो केवल नॉलेज तक ही अपने को सीमित नहीं रखना है, अपने को नॉलेज से आगे बढ़ा के सोचना है कि सोचें कि उस नॉलेज का उपयोग कैसा हो, और उसके आगे ये सोचें कि अभी तक जो उस नॉलेज का उपयोग होता रहा है क्या उससे भी ज्यादा उपयोग हो सकता है। ये चीज सोचने की है। प्रतिमा जी, दैट्स ऑल आई हैव। Yes, sir. So I think I'm done with explaining it all about. So metacognition has its answers for it, for all the things that I told you, whether it's decision making, problem solving, reasoning, subject matter, communication, your own emotional intelligence, every aspect, every part of your life has metacognition. Explore that, enhance and evaluate yourself. And this is how the cycle continues. I think thank you so very much for all of you who have been great listeners. I am really happy presenting this topic because it was very complex. I was just thinking, how do I really split it? And I felt that okay, we have given justice to the entire subject, which was very difficult. But with this kind of a crux and a very